Very good morning students and most welcome again in online classes. As you know that we were having grammar section and the last model that was left at the time in the last class is about your should students. So let's say the next model should. As far as the points are, as far as the matter of points are concerned, I told you about the points. So let's say the same again in short. It is used in past of shall. In past of shall we are having the next model should. Actually it's a past of shall. जो should होता है वो shall का past होता है. It's a past of shall. It's a past of shall. We are having the next model should right now, and the point number first is in past of shall in indirect speech, and the point number second is for moral duty, and the point number third is for advice. It is used in past of shall. It is used for moral duty. It is used for advice. It is used to show negativity after less. It is used for official notification and instructions. Okay, student, these are the points to use should model. So let's have the example one by one. Let's have the example one by one, students. Okay, let's have example number first. The first one is past of shall. Example number first, indirect speech. Okay, the first we'll have the example of direct speech. I said, I shall not stand there at all. Okay, example of direct speech is I said I shall not stand there at all. Shall plus first form, model plus first form. Okay, indirect speech. I said, to remove your commas, mention that. I said that. Okay, the first person we have, and the reporter or the subject or reporting verb is I here, so that's why it will be changed into I. Then I shall into should. Then I should not stand there at all. Okay, I said that I should not stand there at all. Example number second. Direct. Okay, I said I shall motivate the students about their annual examination tomorrow. Okay, reporting subject or reporting verb, it's a reporter, reporting verb, and the speech of a reporter is known as reported speech. Okay, let's have the answer. I said that I should motivate the students about their annual examination okay, the next day, or you can also mention or the following day, okay, in place of
tomorrow. Okay, let's have the students how I have changed the given statement, okay, as per the norms of narration or speech. So the point number first is basically in past of shall we use should and in direct speech. The point is in direct speech, and I have written two examples of direct speech here so that you can easily know that how to change the speech exactly. But don't forget that we have the whole chapter when it come the time to write about something or more about your speech or narration, students. Okay, right now just have examples, a easy one. Example number first, okay, to change shall into should. Don't forget that to change shall into should, you should have the first person like INV. अगर आपको शैल को शुड में चेंज करना है तो एसेंशियली रिपोर्टर आपका आई होना चाहिए, या फिर जो आपका फर्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का वो आपका आई या वी होना चाहिए. अदरवाइज योर शैल विल नॉट बी चेंज इनटू शुड एट ऑल, इट विल चेंज ऑटोमेटिक इनटू वुड. अब आप कहोगे सर यहाँ पे शैल है, यहाँ पे शैल है तो शैल तो शुड में चेंज होगा ना. नहीं, अगर यहाँ पर होता आप सभी का सपोज करें, यहाँ पे होता ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी आई shall, उसने अगर यहाँ पर ही होता सपोज करें, then the I will change into he, और he के साथ में बेटा should नहीं है, he के साथ में shall नहीं आता है, will आता है, and the shall will automatically change into would, वो अपने आप convert हो जाता. And that's niyam, that niyam or formula we'll learn in narration at the time when we'll have the chapter. Just forget about it. Let's say the should now. Example number first, I said I shall not stand there and at all. I said I shall not stand there at all, कि मैंने कहा कि मैं वहाँ पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं होऊंगा, कि मैंने कहा कि मैं वहाँ पर स्टैंड नहीं करूँगा. सिंपल सेंटेंस यहाँ पे, आई शेल नॉट स्टैंड देयर, नो डिटर्मिनेशन. यहाँ पे मैं आई शेल नॉट स्टैंड देयर, आई सेड आई शेल नॉट स्टैंड देयर एट ऑल, कि मैं वहाँ पर खड़ा नहीं होऊंगा एट ऑल, बिल्कुल भी. हाउ आई चेंज दिस स्टेटमेंट और डायरेक्ट स्पीच स्टूडेंट्स? आई, ओके, द रिपोर्टर विल रिमेन द सेम. Even the said, like if the example is of assertive sentence, your said will remain as said, it will not change to told or replied at all. Okay, said का said रहेगा. Without object or without the object or reporting verb, you cannot change said into told or reply at all. The said will remain as said, said का said रहेगा अगर object नहीं है तो. okay, आई का आई रहा, said का said रहा object के बिना. Then conjunction, I have mentioned that as the name of, as the formula of your assertive sentence. To just to remove your inverted comma, you have to put a conjunction like that in assertive sentences. okay, that लगाया. I यहाँ पर I का I कैसे रहा? The thing is that because the first person, as per the rule of son, there is a formula like as per the rule of son, S-O-N. okay, there is a rule of son that follows with a series of 123, 1, 2, 3, first person. okay, the first person of reported speech, of reported speech must be changed or should be changed as per the first person of the reported speech, should be changed as per the subject of reporting verb. The first persons of the reported speech should be changed as per the subject of reporting verb, and the subject of reporting verb we have is there I. यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, यहाँ भी मैं ही हूँ, यहाँ भी मैं ही हूँ, तो मैं कैसे बदलूंगा? वो तो वही रहेगा ना. ओके, तो आई का आई रखा और आई के साथ बेटा शैल ही आता है. That's why I have changed शैल into should. ओके, तो शैल का क्या हो गया? शुड हो गया. नरेशन का नॉर्म है ये वाला. इट्स द नियम और फॉर्मूला टू चेंज द शैल इनटू शुड इन नरेशन. नेगेटिव चेंज नहीं होगा. फर्स्ट वन विल रिमेन द सेम बिकॉज मॉडल प्रोसीड विद ऑल द मॉडल प्रोसीड्स विद द फर्स्ट फॉर्म इन एक्टिव सेंटेंसेस. कि मॉडल जो एक्टिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ में आते हैं. okay, there no need to change. You can change here into there, but there is already changed. okay, at all will remain the same. okay, that's way we change the narration exactly. I said that I should not stand there at all, the answer of your given statement. It shows that we use should in past of shall. It shows that we use should in past of shall, कि shall के पास में should का यूज होता है कहाँ पर? In direct speech में. Example number second, we check it out there. Direct, I said I shall motivate. I shall motivate the students about their annual examination tomorrow. The students, okay, the students, okay, annual examination tomorrow. I said, मैंने कहा I shall motivate. I shall motivate, motivate करूँगा. कोई determination यहाँ पर नहीं है, because for determination we should use will instead of shall to show determination. okay, I said I shall motivate the students about the annual examination tomorrow. कि कल मैं विद्यार्थियों को उनके annual examination के बारे में मोटिवेट करूँगा. मैंने ऐसा कुछ कहा, मैंने ऐसा कहा. अब चेंज कैसे करना है? ये दोनों आपके चेंज हो गए नहीं, बिकॉज आई हैव यूज्ड ऑब्जेक्ट हियर. रिपोर्टर विल रिमेन द सेम, रिपोर्टिंग वर्ब विल रिमेन द सेम, कंजंक्शन विल बी दैट. आई का आई रहेगा बिकॉज यहाँ भी मैं ही हूँ, यहाँ भी मैं ही हूँ. ओके,
आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, here we have first person and here we have the subject which is in first person. Okay, shall into should motivate, will motivate because modal proceed with the first form. Okay, then the article will remain the same. Students about their annual examination tomorrow, the adverb should be changed into the next day or the following day. You can change the adverb like tomorrow into the next day or the following day. Is that clear, students? That's the way to change the direct speech into indirect speech. But here we have learned the most important thing of our first point is about in past of shall, how to use shall, how to use should in past of shall exactly in indirect speech. And indirect speech, I showed you that. Okay, let's have your next point, students, without wasting your time. And the next point is about your for moral duty. The next is for moral duty. And the next point is for moral duty. And the next point is for moral duty. नैतिक कर्तव्य. Example number 1. Okay. Example number 1. We are having should right now. Very easy example to understand. We should respect our elders. दोनों साथ ही कर लो. And parents. Example number 2. We should not tell a lie. Example number 3. One should obey one's duty. Example number 4. We should salute our national flag. Okay, some more you can have also like we should respect. इसके अलावा एक और लिखो, इजी हो जाएगा. We should respect our motherland. Let's have the different one. We should obey our social values. Okay, easy one and very easy one and different one. Okay, let's have the meaning of these sentences. Today very easy one, a level of 8th standard I can say that. Okay, just to understand that point here, moral duty. The meaning of moral duty is basically नैतिक कर्तव्य. The meaning of moral duty is here नैतिक कर्तव्य, कि नैतिकता का पालन करना पड़ता है. There is no legal duty at all. The same we learned in must there. When we had must in our classes, okay, we learned there the must proceed with the legal duty also. कि must legal duty के साथ आता है. Right now we have here the point is moral duty. The point speaks about the morality. The point speaks about the morality. Okay, as a morality, as a duty, जिसका obey, जिसका follow up अंदर से करते हो. Okay, inner soul से करते हो, अपने अंतरात्मा से करते हो, अपने सुविचार से करते हो, अपने मैनर से करते हो. Okay, it speaks about your moral duty. और जिसका उल्लंघन करने पर, जिसको obey ना करने पर आपको legally punishment नहीं किया जाता. If you will not follow, if you will not obey these sentences or some other journal example, some other journal manners in your personal life, you will not be hanged or you will not be legally punished at all, like we had in must there, like we had in must model, M-U-S-T must model. So let's have the clarification of these examples one by one, students. Example number first is we should respect our elders, E-L-D-R, elders and parents. हमें अपने बड़ों का और माता पिता का जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए. नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए. Laws are there who are not giving respect. Laws are there who don't respect to their elders and parents. तो उनको पनिशमेंट होता है क्या? उनको जेल में डाल देते हैं क्या? क्यों ऐसा होता है क्या?
Lots of people are there, millions and millions people are there who don't respect to their elders and their parents at all. बहुत से ऐसे हैं पेरेंट्स को नहीं रिस्पेक्ट देते हैं, ओल्ड एज में छोड़ देते हैं, तो उनको जेल में डाल देते हैं, कि हैंग कर देते हैं, फांसी लगा जाते हैं, नहीं लगाते ना. दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ पॉइंट कम्स इन, दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स कम इन मोरल ड्यूटी. नैतिक कर्तव्य है, करना चाहिए. ओके, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड पेरेंट्स. हमें अपने बड़ों का और माता पिता का सम्मान करना चाहिए. मोरालिटी बोलती है, नैतिकता ऐसा बोलती है. नैतिक ड्यूटी हमारी, कर्तव्य है हमारा. वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. But those people who are telling lies day by day, okay, should we give them punishment? हमें punishment देना चाहिए कि उनको? No, it's not a matter of legal action at all. Okay, so we should not tell a lie. One should obey one's duty. किसी भी व्यक्ति को, one means कोई भी personality, कोई भी person यहाँ पर है, male, female है, boy है, girl है, कोई भी child है. One should obey one's duty. किसी भी आदमी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए. There may be duty of any kind, but one should obey one's duty. किसी भी आदमी, किसी व्यक्ति को अपनी ड्यूटी का जो है obey पालन करना चाहिए, obey करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए. नैतिक कर्तव्य, we should salute our national flag. हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करना चाहिए. We should respect our national flag. हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए. We should salute our national flag. हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करना चाहिए. मोरालिटी बोलती है ऐसा हमेशा. नैतिकता बोलती है यहाँ पे लीगल पनिशमेंट नहीं कि सल्यूट नहीं कर रहे हो, सपोज करो, सपोज टू इफ द नेशनल फ्लैग इज फ्लाइंग इन द एयर इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू नॉट सल्यूट दैट फ्लैग, यू विल नॉट बी पनिश्ड लीगली. आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी एक इंटीग्रेशन को शो करने के लिए, जस्ट टू शो फ्रैटर्निटी, ओके, इन टू मेंटेन सोशल हार्मनी, okay, or the sovereignty of your country, you should salute your national flag. Okay, we should obey our social values. We should obey our social values. हमें अपने सामाजिक मूल्यों का पालन करना चाहिए. Before this example, okay, I was going to write the example like that. We should respect our motherland. हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए. But instead of that example, I mentioned we should obey social values. Social values speaks about, social values doesn't speak about the caste system of India. Okay, because it is irrelevant, वो अलग है, वो सिस्टम अलग है. Social values like that कि बड़ों का सम्मान का पैर छूना हमारे यहाँ पे कल्चर है. Okay, to touch the feet of elders is basically, you know, fragrance of our social values. And in spite of this and apart from this, we have another one like that, like नमस्कार करना हमारे values में आता है, हमारे मूल्य में आता है. Like fraternity we have, भाईचारा हमारा सोशल वैल्यूज़ में आता है. और दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर काउंटेड इन सोशल वैल्यूज, एंड वी शुड ओबे आवर सोशल वैल्यूज़. हमें हमारे सोशल वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए. मतलब जस्टिस, द वर्ड जस्टिस इज अ वर्ड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल कम पॉलिटिकल वैल्यूज़. द वर्ड जस्टिस, द वर्ड इक्वलिटी, द वर्ड फ्रैटर्निटी, द वर्ड जस्टिस, equality, fraternity तो social value, purely social है, but the word basically, the word like justice and the word like equality are social come political values, are social come political values. तो वहाँ पे socially भी है और politically भी है. तो आप कैसे भी नज़रिए से करें, लेकिन we should obey our social values. हमें हमारे social values का पालन करना चाहिए. So let's have another one is all about your morality, जहाँ पे legally punishment नहीं मिलता है but follow करना पड़ता है moral point of view से. So let's have the next one for advice. Okay, let's have the next point for advice. Let's have the next point for advice. Point number 3 for advice. Example number 1. The should is also used for advice. You should not give the child a knife to play. Example number 2. You should abstain from smoking.
She should take her online classes. He should not go from this way. Easy example, okay? Just have the clarification of the point number 3, students. For advice के लिए, सलाह के लिए, we should not give the child, we should not give the child, we should not give should plus first form, should plus first form, should plus first form, should plus first form, okay? You should not give the child a knife to play with. Okay? Example is, you should not give the child a knife to play with. Play with means with a knife, okay? You should not give the child a knife to play with, कि तुम्हें बच्चे को जो खेलने के लिए चाकू नहीं देना चाहिए, okay? बच्चे को जो है खेलने के लिए चाकू नहीं देना चाहिए. You should not give the child a knife to play with. मतलब चाइल्ड को नाइफ के साथ खेलने के लिए, मतलब जो नाइफ है तुम्हें बच्चे को नहीं देना चाहिए. यू शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विथ, कि तुम्हें बच्चे को चाकू के साथ खेलने के लिए, मतलब जो चाकू जो बेसिकली वो नहीं देना चाहिए. इट मीन्स दैट कि तुम्हें बच्चे को जो है चाइल्ड को चाकू नहीं देना चाहिए टू प्ले खेलने के लिए. और यहाँ पे जो विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका यूज हुआ है, इट इज़ फॉर द नाइफ और नाइफ. तो सिंपल यहाँ पर एडवाइस है दैट यू शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विथ, कि तुम्हें बच्चे को जो है खेलने के लिए चाकू नहीं देना चाहिए. द प्रीपोजिशन विथ बेसिकली यूज फॉर योर बेसिकली नाउन नाइफ हियर. ओके, एग्जांपल नंबर 2, you should abstain, ABSTAIN, abstain means बचाव करना. The meaning of abstain is बचना या बचाव करना. You should abstain from smoking, तुम्हें स्मोकिंग से बचना चाहिए. You should abstain from smoking, तुम्हें स्मोकिंग से बचना चाहिए. You should take her on, she should take her online classes, उसे अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए. She should take her online classes, उसे अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए. प्योर एडवाइस है यहाँ पे, कोई यहाँ पे कंपल्शन, यहाँ पे कोई लीगल या ना प्रोविजंस की बात यहाँ पे नहीं हो रही. जस्ट टू फॉलो एन एडवाइस. She should take her online classes. He should not go from this way, उसे इस तरीके से या इस मार्ग से नहीं जाना चाहिए. ओके, ही शुड नॉट गो फ्रॉम दिस वे, उसे इस तरीके से या इस मार्ग से, इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए. मे बी सम मिस हैपनिंग देयर, कुछ गलत वहाँ पे हो सकता है. दैट्स व्हाई समवन गिविंग एडवाइस, ही शुड नॉट गो फ्रॉम दिस वे, उसे इस मार्ग से नहीं जाना चाहिए. ही शुड नॉट गो, ओके, यू शुड नॉट गो फ्रॉम दिस वे, यहाँ मार्ग है बेटा, कुछ और नहीं है. यू शुड नॉट गो फ्रॉम दिस वे, उसे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए. Is that clear? These kind of examples are basically of advice. You can have lots. You can have lots of example regards to the same section or the point of should. Let's have the next one, students. To show negativity after lest. To show negativity after lest. Let's have the next point. To show negativity after lest, the point number 4 to write. Example number 1. To show negativity, the point is negativity after lest, L-E-S-T, lest. To show negativity after lest. Run fast, lest you should miss the train. Example number 2, work hard lest you should work hard lest you should fail. Pay heed lest you should fall.
write fast, lest you should miss the line or miss the word limits. Okay, whatever you can mention as per understanding level, there is no problem. And the next point basically speaks about to show negativity after less. The very most important point in should basic. Okay students, less के बाद negativity show करने के लिए should use करते हैं. less के बाद negativity show करने के लिए हम लोग should का इस्तेमाल करते हैं. So let's say example number first, run fast lest you should miss the train. Run fast, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, run fast lest you should miss the train, कि तेज दौड़ो lest you should miss the train, कि कहीं तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए. Run fast lest you should miss the train. The word lest exactly shows negativity, कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा. कंडीशन नहीं यहाँ पे, ऐसा करो वरना प्रॉब्लम कुछ और होगी. Run fast, तेज दौड़ो, lest you should miss the train, वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी. Okay, run fast. The condition is run fast, तेज दौड़ना पड़ेगा. Okay, इसको यहाँ पे प्योर कंडीशन नहीं है कि वी आर हैविंग कंडीशनल सेंटेंसेस है यार. देखिए सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि लेस जो है नेगेटिविटी शो करता है. ओके, टू शो नेगेटिविटी आफ्टर लेस. लेस के बाद नेगेटिविटी शो करने के लिए, ओके, लेस के बाद नेगेटिविटी शो करने के लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं. ओके, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि तेज दौड़ो लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए. ओके, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ. Okay, the less has the negative meaning. Less negative meaning रखता है, और to show negativity after less we use should. Work hard lest you should fail, कि मेहनत करो कहीं फेल ना हो जाओ, कहीं फेल ना हो जाओ. Pay heed, P-A-Y, pay, H-E-E-D, heed, pay heed lest you should fall, कि ध्यान दो कहीं गिर ना जाओ, ध्यान दो कहीं गिर ना जाओ. Fall, pay heed, ध्यान दो मतलब ध्यान दो, pay heed lest you should fall. राइट फास्ट, तेज लिखो. राइट फास्ट लास्ट यू शुड मिस द लाइन, कहीं तुम्हारी लाइन ना छूट जाए. राइट फास्ट लास्ट यू शुड मिस द वर्ड लिमिट्स, कहीं तुम्हारी वर्ड लिमिट्स ना मिस हो जाए. इज इट क्लियर? दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स बेसिकली स्पीक्स अबाउट लेस्ट, शुड, टू शो नेगेटिविटी आफ्टर लेस्ट. लेस्ट के बाद नेगेटिविटी शो करने के लिए शुड का इस्तेमाल होता है. इफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन इन बेसिकली ट्रांसलेशन और बेसिकली हैविंग द पॉइंट ऑफ शुड where there is less, don't forget that अगर less आएगा तो definitely should लगाना है. और मैं जनरल लैंग्वेज में कहूँ आप सभी से, if you have less in your sentence supposed to be, then just don't think about the model at all. क्योंकि less के आने के बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है बेटा. Don't use your brain at all. Just use should there. दिमाग मत लगाओ, should लगाओ. Okay? So run fast lest you should miss the train. Work hard lest you should fail. Pay heed lest you should fall. Write fast lest you should miss the line. Okay, let's do the last one. Official notification. Don't forget the same I used in must to. The same I used in must to for official notification. For official notification I use in must there. Okay, must में instructions के लिए. For official notification, for formal notice, for instruction we use must and should simultaneously. एक साथ, और सिमिलरली वी कैन से दैट, हम साथ साथ समान रूप से इस्तेमाल करते हैं, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है. ऑफिशियली दोनों का इस्तेमाल होता है. बट व्हेन देयर इज अ मैटर ऑफ कंपल्शन, व्हेन देयर इज अ मैटर ऑफ कंपल्शन वी यूज ओनली मस्ट, ओनली मस्ट. लेट्स हैव द लास्ट वन. द लास्ट वन, ओके, आई एम गोइंग टू हैव ओनली 2 एग्जांपल जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट्स. एग्जांपल नंबर 1. For official notification, it is used for official notification. Formal notice you can mention like that. You can also mention like formal notices. Okay, you can write down for formal notices, for official notification and instruction, for official notification dash formal notices, then and instructions you can have 3. Okay, all the 3 words, there is no problem. Okay, it is counting this. You can write down example number 1. We are having should. Students should write all the questions.
candidates should bring their admit cards. Admit cards. Students should write with blue pen only. Lots of example we can have for the staff members, two staff members के लिए, employees के लिए we can have lots of example. Okay, the last point is for official notification and instruction. Official notification और instruction के लिए आपका should आता है students. Last at the finish or the final touch of your should model. Students should write. Students should plus first form, should plus first form, bring, bring, should plus first form, should write. Students should write. Students should write all the questions कि विद्यार्थियों को सभी प्रश्न लिखने हैं. यहाँ पे नहीं है लिखना चाहिए, एडवाइस नहीं है यहाँ पर. स्टूडेंट्स को सभी प्रश्न लिखने हैं. इज अ क्लियर ट्रांसलेशन विल बी लिखने हैं. यहाँ पे नहीं स्टूडेंट्स को सभी प्रश्न करने चाहिए. यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं है. Okay, for official notification the sentence will not sound the advice, will not sound okay the sense of advice at all. एडवाइस नहीं आएगा यहाँ पर. यहाँ पे है स्टूडेंट्स शुड राइट ऑल द क्वेश्चन, विद्यार्थियों को सभी प्रश्न लिखने हैं. कैंडिडेट शुड ब्रिंग द एडमिट कार्ड्स, कि कैंडिडेट्स को अपने एडमिट कार्ड्स लेके आने हैं. स्टूडेंट्स शुड राइट विद ब्लू पेन ओनली, स्टूडेंट्स को ब्लू पेन से लिखना है केवल. यहाँ पे नहीं कि लिखना चाहिए, ऐसा एडवाइस नहीं है यहाँ पर. यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे फॉर्मल नोटिस है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है. और वेयर देयर इज इंस्ट्रक्शन, वेयर देयर इज फॉर्मल नोटिस, वेयर देयर इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देयर वुड नॉट बी एडवाइस एट ऑल. वहाँ पे एडवाइस नहीं होगी. एडवाइस का एंगल आप टच कर सकते हो, but there will not be a sound of advice there, because it's a matter of official notification, it's a matter of formal notice, it's a matter of instruction. Students should write all the questions, candidates should bring their admit cards, students should write with blue pen only. It's all about today. The next we'll have in our next class. Thank you students and have a nice day.